Sure. Thank you, Sanjay. Just want to start off by saying I'm so honored to have Professor Jagbir Singh ji here. Uh, welcome, sir. और मेरे को सबसे पहले प्रोफेसर कपिल कपूर से के घर पे शायद मिले थे या उनके साथ में मिले थे और प्रोफेसर कपिल कपूर also has a lot of respect for Professor Jagbir Singh's work. So we are honored to have him here on Jaipur Dialogues. Absolutely. Yes, very much so. So I'm going to spend most of this session in listening to Professor Saab. I'm going to do a little bit of context setting from my own research, which is ongoing, and I'll give a little bit of background. मैं खुद चंडीगढ़ में जन्मा बड़ा हुआ और हमारे पंजाब में जो बड़ा होता है तो उसके लिए अभी भी आज ये मन के अंदर डिवीजन नहीं होती कि भी ये सिख बाउंड्री है और ये हिंदू बाउंड्री है ये बाउंड्री हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि हमारे घर में हम गुरुद्वारा उतने ही जाते थे, बल्कि ज्यादा गुरुद्वारे में जाना हो जाता था जितना मंदिर में जाना होता था। तो ये जो बाउंड्री बनाई गई ये बहुत ही आर्टिफिशियल लगी और मैं वहां पे जो सारी एजिटेशन खड़ी करी और मैं वहां पे चंडीगढ़ में था तब जब ये बसों से निकाल के लोगों को मारा गया, ऐसा हुआ। उसके बाद फिर जो इन्होंने कांग्रेस ने बाद में खड़ा किया 84 किया, तो ये सारा का सारा जैसे कह रहे हैं ना, it's still a wound in some senses. So anything that we can go towards healing is in my mind a very important thing, and I want to little bit dig into how this wounding was created, how this chasm was created. So the first witness that I'm going to call to this is this scholar Max Arthur McAuliffe. So he is very influential because he literally in some senses starts the academic study in academia. All of the academic study that is happening, especially in the English language, all of the universities that are really British universities, if you think about all the universities established, whether Punjabi University, all of these have a British pedigree in some ways. So those universities, the seed is a lot of the study. When you start studying Sikhism, either history or the philosophy in English, this McAuliffe is a central figure, and he wrote the 6-volume Sikh religion. It's Guru's Sacred Writings and Authors. He was a British administrator. Of course, he was part of the ICS, and his aim and loyalty was very clear what he was doing. So I'm going to just take some excerpts from the introduction to his this 6-volume work, and those excerpts will give us a context of what was going on in setting up this scholarship, and all of the debates and dialogues that take place even today in some senses are found in this scholarship, are rooted in this particular thing. And on the outside I want to also say, because ye itna zyada question aata rehta hai, ye which is this, are Sikhs Hindus? This has become this big question. I am actually not very interested in this question. My more interesting question is, how did this question even start being asked? So the question itself is not particularly interesting, and we can talk at some other point why that question is not interesting, because even how something is defined and what is religion and all of this, there's a very vast field that actually that question itself is an Abrahamic question actually. So that question is not an interesting question. But how did this question start getting asked? So in the very introduction to the Sikh religion by McAuliffe, the volume 1, he says he recently met in Lahore young men claiming to be descendants of the Gurus who told me that they were Hindus and they could not read the characters in which the sacred books were written. Whether the object of their tutors and advisors was or was not to make them disloyal. Such youths are ignorant of the Sikh religion and its prophecies in favor of the English. So this is the outset setting, which is really interesting. So two things came up here. Firstly,
it's an anthropological note that he met some Sikh people, Sikh descendants of the gurus, and they were saying we are Hindus. They didn't have any conception we are different. Okay, so that is the first point that is inherent. The second one is he thinks that knowing this would somehow make them disloyal. Disloyal to who? Disloyal to the British Empire. So the idea that these people were not thinking themselves different from the Hindus was a matter of concern to him because it was called disloyalty to the empire. And then he touts out this prophecy that they were ignorant of the Sikh religion. And in what way were they ignorant? Of the prophecies in favor of the English. And we are going to see what exactly these prophecies are that he quotes. And this will give you. So this guy is sounding very much like. Pardon me? Yeah. If I may interrupt, this is sounding very much of the construction of the Lemuria and Gondwana type of prophecies that were made by Robert Caldwell. Yes. When he created that Dravidian and Aryan binary. Yes, the same binary has been created there. In fact, I touched briefly on somebody from the south at the end of the presentation. But the very interesting, the two or three things that just jump out here. Firstly, the fact that the people were not having this distinction, and the thing that this was very upsetting to him because he thought that this was making them, this is a symptom of disloyalty. And then this prophecy, and we'll talk about the prophecy. Then he continues, some of the Sikh states, so it's not disloyalty, it's not only that it's the problem among the common Sikhs. Some of the Sikh states, in ignorance of the teaching of the Gurus, and who's going to interpret the Guru's teaching? Macauliffe, right? In ignorance of the teachings of Gurus, have maintained temples and spiritual regions at Haridwar and Rishikesh for the reception of pilgrims. At Haridwar, they hold great religious fairs every 12 years at the time when the sun enters the lunar mansion of Aquarius, Kumbh. It is calculated that at least 100,000 Sikhs were present at the last great fair in Haridwar. तो अब क्या प्रॉब्लम है कि कुंभ में इनका डेरा लगता है, कुंभ में इनका डेरा लगता है और जो 6 स्टेट्स हैं वो इसको सब सपोर्ट कर रहे हैं. So again, if you look at it from the record of a historic record, he's admitting in the historic record that the Sikh Sangat is participating in the Kumbh, and this is being supported by the 6 states. Okay. So now either we have to say all of these people were ignorant, and now it is Macauliffe's job to actually teach them the Guru's. Macauliffe is the new Guru who's going to bring them back to the true teachings, because all these people were deviant from the true teaching. Okay. Yeah. So later on, I even call this is Macauliffe Sikhi. The Sikhi that emerges from this is not good Sikhi, it is Macauliffe Sikhi. It's Macauliffe's interpretation of how they should be. So what is this prophecy that he talks about now? This one prophecy will tell you what is Macauliffe's agenda, what is his point of view. He claims Guru Gobind Singh has made this prophecy, and this is in his book. No source is given. The combined armies of the English and Sikhs shall be very powerful as long as they rule with united councils. The empire of the British shall vastly increase, and they shall in every way obtain prosperity. Wherever they take their armies, they shall conquer and bestow thrones on their vassals. Then in every house shall be wealth, in every house religion, every house learning, and in every house happiness. So the prophecy is that the British rule is going to be so benevolent, and this is going to spread, and therefore the Sikhs and the English armies will fight together. Of course, the rule will remain of the British because the empire of the British will increase, and this will create prosperity. Of course, we know this is a complete lie. The British looted $47 trillion from India and impoverished India, impoverished the countryside, impoverished Punjab. But he's assigning this prophecy to Guru Gobind Singh. Look at the temerity of he's assigning this prophecy to Guru Gobind Singh, and this is the kind of historical research that we have to look forward to in the rest of the book. But again, this is the authority book, remember. So then he defines what Sikhism is. So some of the political merits of the Sikhism: it prohibits idolatry, hypocrisy, caste exclusiveness, consecration of videos, inurement of women, use of wine, tobacco, slander, pilgrimages to the sacred rivers and tanks of the Hindus, and it inculcates loyalty. Loyalty to what? To the British Empire.
British crown, yes. This is the defining characteristics is that it inculcates. And then he has a laundry list of how Hinduism is defined as the other, right? Hinduism is defined as the other. It is caste ridden, it is idolatrous, it does this to women. This is the standard atrocity literature that the missionaries have produced on Hinduism. And now Sikhism is defined in contrast to that, so that it inculcates loyalty to the British Empire. Okay, and this is the final slide here, which is on Macauliffe, which is this Macauliffe Sikhism, which is Macauliffe's interpretation of this. First, Macauliffe's claim that the Sikhs in Punjab don't know what they're doing. They are bereft. They are misled from the teaching of the true gurus. So Macauliffe is going to come and tell them what the true teaching is, so that they can discard this idolatry and all of this thing that, according to him, is crept in. So, what is this Macauliffe Sikhi? This is spread in Macauliffe himself is saying, in our time, one of the principal agencies for the preservation of the Sikh religion has been the practice of military officers commanding Sikh regiments to send Sikh recruits to receive baptism. Again, this is a very problematic term. According to the rites prescribed by Guru Gobind Singh, an endeavor to preserve in their subsequent career from the contagion of idolatry. So this is now a responsibility of the army. So in everything else, the military, thus ignoring or despising the restraints imposed by the civil policy of what is called religious neutrality, have practically become the main hierophants and guardians of the Sikh religion. So the main guardians of the Sikh religion is the British military. What an amazing fact that the guardians of the Sikh religions are not the Panthis. They are not all of the people who are taking the traditions, but they are the military. And this is the central facet of this British Sikhi that emerges, which is really the root of all the separatism that goes on later on. So, just to set up Professor Saab's later discussion, I'm going to just take this one quote. Again, for me, it is not that question, as I said, are Sikhs Hindus, as a very, not a theoretically well put question, and we can go into it day. But this is one of the quotes that is taken from Sri Guru Granth Sahib. Na hum Hindu, na Musalman. Okay, and this is actually coming from Kabir ji, Sant Kabir ji. And what is this quote? This is a classic Advaita understanding of dissolution of identity, right? The same thing you find over and over again. And of course, later on it says Kabir, Kahu Kabiri, Kiya Bakhana, Guru Pir Mili Khudi Khasmu Pashana. So again, this is very, if you look at the Indic traditions, this is very classical. We are saying my identity is dissolved, and through the Guru I have achieved liberation. Right? This is all of the Indic traditions in a way. So now that quote is taken by these people to say, okay, Sikhs are not Hindus. Again, I'm not debating that. It's not an interesting question, but I want to say, if you take that line of identity dissolution, so now the same system is used in Kerala, saying Sri Narayan Guru is not Hindu. Somebody, Kerala BJP calls Sri Narayan Guru Hindu, say it, and netizens lash out. Who are these netizens? The same communists who have been, brought up on this ideas, who don't understand the Advaita Darshan, who don't understand the dissolution of identity. So Sri Narayan Guru also says, I have no caste, no religion. So what does that mean? That means that he's not a Hindu anymore, because this is the lens that they are viewing it, right? So it's the Abrahamic lens of identity. But now it becomes problematic. So what about this? This is the Nirvan Shatkam. What is it saying? Na punyam, na papam, na sokhyam, na dukhyam, na mantro, na tirtham, na veda, na yagya. So if you say na veda, na yagya, if this had been put in the Guru Granth Sahib, they would have said, look, Guru Granth Sahib is rejecting Veda, Guru Granth Sahib is rejecting Yagya. But this is Adi Shankaracharya. Now you'll have to say Adi Shankaracharya is not Hindu, which means that nobody is Hindu. I will supplement this. Yes. Yeah. There is a shlok in the Bhagavad Gita. Okay? Right. This is, I think, second chapter, yes. 46. And the shlok is,
यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके. Okay, it says that if you're there and there is flood water all around, and there is a small pond, so you have only that much use for that pond, then the second part of the shloka is Yava narthodapane sarvata samprutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah. That's somebody, some knowledgeable person who has experienced the self or the supreme self, that he has a use for Vedas only as much as somebody who is there in front of this great flood of water has for a small pond. Absolutely. So using that, you could even say that Bhagavan Krishna is also saying that you have no use for Vedas. Yeah, you can discard the Vedas. In fact, this is a very interesting, very interesting episode. I'll mention here. Somebody in Twitter, some Christian evangelist came to me and he was trying to proselytize to me on Twitter, and he was saying that he was telling me that you can come to Jesus and you'll get moksha. And I said, okay, so have you gotten moksha? So he says, yes. I said, then you can throw away your Bible. What need do you have for the Bible if you've gotten moksha? Right? So then he kind of disappeared. So this whole translation of the Indic liberation into this Christian salvation, into Christian baptism, this whole notion of idolatry, why it's sinful, this whole imposition of Christian theology onto Hindu traditions, onto Sikh traditions, all of this is really the source of the problem also. So over to you, Professor. Before we go to Professor Jagbir Singh, I'll just add some context, some little more context. Is that I sometimes I joke with certain people, who actually, if you see that a lot of Sikh scholars, I don't know how, but they were so influenced by this person, they almost took him as a guru. People like Khan Singh Nabha, who was himself a very respected scholar, he bought Macauliffe's line completely, hook, line, and sinker. And then he wrote that book, that Tat Khalsa movement, then moving to the what is called removal of murtis, and then Sikh Gurdwara Prabandhak Committee and all that. That's all influenced by this line of thinking. That is what I think. And I sometimes jokingly tell people that, especially in the context of Sikhs from Canada, I tell them that the Sikhs of Canada, they neither honor the 10 gurus nor the 11th, that is the Guru Granth Sahib. They only honor the 12th guru, and that 12th guru is Arthur McAuliffe. Sir, Professor Saab, now the floor is yours. हाँ नहीं, आपने सानू जी ने जो ऐतिहासिक संदर्भ में सिखिज्म के साथ जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं उसकी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें बताई, और ख़ास तौर पर जो मैकालिफ है, मैकालिफ से पहले असल में एक और लेखक था जो जिसको क्रिश्चियन थियोलॉजी को, सिख रिलीजन को क्रिश्चियन थियोलॉजी के अनुसार उसको पेश करने के लिए एक और राइटर था, उसको भेजा था उसने। मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ये लाइन नहीं है, तो आपको शायद पता होगा। मैकालिफ से पहले हाँ एक और अटेम्प्टेड ट्रांसलेशन था गुरु ग्रंथ साहब का, जो एक पहले हुआ था। हाँ, तो उसने छोड़ दिया बीच में। वो बीच में छोड़ दिया था। तो वो उसने एक्चुअली वहां से डिस्टॉर्शन शुरू होती है। जी। डिस्टॉर्शन ये होती है कि हमारा जो सिख धर्म है ये मजहब और रिलीजन नहीं है। पहली बात तो मैं बिल्कुल जो आपने बहुत अच्छी बात इसमें उठाई है कि सिख थॉट को अब्राहमाइज करने की जो कोशिश है ये बिल्कुल फिजूल है। मैं तो तकरीबन 60 साल से
गुरुवाणी और मतलब इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन पढ़ रहा हूँ। 69 में मैंने गुरु नानक वाणी पे पीएचडी की थी। गुरु नानक वाणी में नैतिकता का संकल्प 69 में गुरु नानक देव जी के 500 साल का प्रकाश उत्सव था, तो मैंने वहाँ पीएचडी की उस वक्त से। और मैंने पहले आपको मैं बता दूं कि उससे पहले मैं तो मार्क्सिस्ट था 67 में। क्योंकि हमारे तो पंजाब में जितने भी है ना, पंजाबी, उर्दू और हिंदी जितने भी लिटरेरी मूवमेंट सब प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी। प्रोग्रेसिव का मतलब था मार्क्सिस्ट, तो मैं भी उसी में था, शामिल हो गया। 58 में तो मैंने फंडामेंटल्स ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पर मैंने तो बहुत से लोगों के साथ वो स्टडी सर्कल भी किए। बिल्कुल। और मैं तो एक एक्सीडेंटल स्कॉलर के तौर पर गुरु नानक वाणी पे रिसर्च करने के लिए आया, लेकिन इसका मुझे लाभ बहुत हुआ। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वो ये हुआ कि मैं जब मेरे मन में जो मार्क्सिज्म का जो बड़ा स्टैंडर्ड है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, इस बात को लेके मैंने शुरू की थी रिसर्च। लेकिन जैसे मैं गुरु नानक वाणी पढ़नी शुरू की, दो चीजें मुझे पता लगी। एक तो कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भारतीय दर्शन के साथ पूरी तरह मिली हुई है। बिल्कुल। मतलब है कि उसके भिन्न है ही नहीं। एक आप समझ भी नहीं सकते उसको। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार से बात शुरू होती है, तो ओंकार तो ब्रह्म का प्रतीक है। और फिर मैंने देखा कि गुरु नानक देव तो बहुत सचेत रूप में ये बात अपनी वाणी के रूप में वो कहते हैं कि गावहो गीत न बिरहड़ा, गावो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। ये गुरु नानक देव अपनी वाणी के बारे में कह रहे हैं कि मैं जो गा रहा हूं कोई गीत नहीं है, कोई लोकगीत भी नहीं है, बिरहड़ा नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है। और आप देखिए कि भक्त कबीर जी ने भी यही बात कही थी कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। ये मैं इसलिए आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि ब्रह्म तो इंडिक सिविलाइजेशन का प्राइम सिंबल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, दो सिविलाइजेशंस हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है। अब्राहमिक सिविलाइजेशन के 3 मजहब हैं, धर्म नहीं मैं उनको कह सकता, बिल्कुल वो बिल्कुल। मजहब हैं, रिलीजन्स हैं। हाँ। और उनकी वो है कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइट। उनकी अपनी वर्ल्ड व्यू है, उनकी अपनी जिंदगी को देखने का, उसको समझाने का, समझने का तरीका, उससे हमें कोई मतभेद नहीं। क्योंकि हर सिविलाइजेशन की एक अपनी कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी होती है, उसका रियलिटी को देखने का उसका अंदाज होता है। हमारा अलग है। हाँ जी। हमारी जो भारतीय, उसको इंडिक सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें 4 धर्म परंपराएं हैं। हाँ जी। वो एक तो सनातन धर्म है, जो मिट्टी से उगा हुआ एक धर्म है। हाँ जी। जिसका कोई ओरिजिन नहीं, आदि अनंत उसका नहीं है। और वो उसमें कोई उसका संस्थापक भी नहीं है। और उस के बाद उसमें जो आते हैं वो पंथ आते हैं। एक तो मतलब बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और सिखिज्म है। ये बात आज सिविलाइजेशनल स्टडीज वाले रिकॉग्नाइज करते हैं। एक बात तो पहले यहाँ से अगर हम समझ लें, तो ये जो मैकालफ है तो कहीं ठहरता नहीं, उसकी कोई बात ही नहीं है। ही हैज नो रेलेवेंस। मैंने जब मैंने देखा कि ये सारी बातें, मैंने तो गुरु नानक वाणी जब मैंने स्टडी करनी शुरू की, मैंने देखा कि एक तो बात ये मानने वाली है कि हमारी जो इंडिक सिविलाइजेशन में 4 धर्म परंपराएं हैं, दे आर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड रिलीजन्स, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई भ्रांति नहीं। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म कह लो, सनातन धर्म तो सभी का है, साझा है। ये चारों एक वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, इनका एक अपना पंथ है, इनकी मत की अवधारणाएं हैं। लेकिन इनका जो सिविलाइजेशनल जो इनका जो साझ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो क्या है कि उसमें हमारी जो वर्ल्ड व्यू है उसमें साझ है, उसी तरह जैसे अब्राहमिक रिलीजन 3 है उनमें साझ है, वो लड़ते रहते हैं। मतलब है कि अगर आप सैमुअल हंटिंगटन को देखो, उन्होंने तो एक बात कही थी कि जो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में होगा क्या, वो कहते हैं कि इसका मूल कारण ये होगा कि दिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस विल बी बिटवीन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एंड रिसर्जेंट इस्लाम। तो ये दो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो एक ही सिविलाइजेशन के अंग हैं। और उनमें, और ये बात इसको छोड़ो, उसने जो असली बात कही जहां हमें अपनी सिविलाइजेशन का डिफरेंस पता चलेगा, उसने बहुत कमाल की बात की जो उसको कई बार हमने सोचते नहीं। उसने कहा ये क्लैश क्यों होगा? उसने कहा ये क्लैश इसलिए होगा कि ये दोनों जो रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, दे आर प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन्स। ये दूसरों को कन्वर्ट करने में विश्वास करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, वो कहते हैं कि परम सत्य के ऊपर केवल हमारा एकाधिकार है। तो मतलब कि एक को कहते हैं कि सत्य तो हमारे पास है, और जो उस सत्य को नहीं मानता उसको वो कहते हैं या तो वो इनफाइडल है, काफर है, या इग्नोरेंट है। हीदन, सी बात, हीदन उनकी है। जो लॉजिक यही है। अब देखिए, हमारी परंपरा ऐसी नहीं है। हमारी परंपरा प्रचार कर सकती है, कन्वर्ट करने में विश्वास ही नहीं है, ना सिख धर्म का, ना जैन धर्म का, ना बुद्ध धर्म का, ना सनातन धर्म का। ये अपने आप फैले हैं। बिल्कुल, हमारे विचार सारी दुनिया में फैले हैं, बुद्धिज्म के भी फैले हैं, सनातन के भी फैले हैं, और अब सिखिज्म के भी फैले हैं, लेकिन हमने कन्वर्ट किसी को नहीं किया। और इसका मतलब ये हुआ, पहले तो ये समझने की बात है कि दोनों में अंतर क्या है। मैंने तो एक राजस्थान की जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैंने एक रिसर्च वर्क किया था। उस वक्त मुझे समझ आई, हमें तो ये पढ़ाया नहीं जाता। हमारी तो जो एजुकेशन नीति है ना हमारे देश की 60 साल से, उसने तो हमें दूर कर दिया अपनी जड़ों से। बिल्कुल। उन्होंने तो कहा कि हमारी जो प्राचीन जो हमारी सभ्यता है उसमें तो कथा कहानियां हैं। वेस्ट की जो एपिस्टीमोलॉजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ो। ये क्या महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, ये तो कथा कहानियां हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं हमें बताया कि हमारी जो सभ्यता है वो 10,000 साल पुरानी है, जब ये ना तो अब्राहमिक सिविलाइजेशन का कोई धर्म है ही नहीं था। बिल्कुल। और ये तो अब मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से और ऋग्वेद के जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग मेथड, हमारा ऋषियों का एक अपना डेटिंग मेथड है, और उसको रिकॉग्नाइज किया गया हमने। उन ऋषियों ने तो जो सितारों की चाल है, ग्रह चाल, ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष का मतलब है ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी है। तो उसमें तो एक एग्जैक्ट डेटिंग मेथड की एक परंपरा है। ऐसे तो नहीं कि हम बिना उस दूरबीन के बता देते हैं हमारे ऋषि कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। उनके पास कोई ऑब्जर्वेटरी थी? उनकी अपनी एक चिंतन परंपरा है। ये खैर इस बात को मैं छोड़ता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो मसला है ये बहुत भ्रम पैदा करने वाला है। हमारी अब्राहमिक सिविलाइजेशन से कोई साझ हो ही नहीं सकती। क्यों? अब्राहमिक सिविलाइजेशन बेसिकली फेथ बेस्ड है, वो विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइम सिंबल है वो गॉड है, अल्लाह है, याहवे है, एलोहीम है, ये उनके नाम हैं। तो उनकी जो बेसिक अवधारणा ये है कि जो एक सुप्रीम बीइंग है जो 14 तबक के बाहर बैठा हुआ है। तो मतलब है कि 14 तबक के बाहर में आदमी तो वहां जा नहीं सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता। तो कैसे मान ले कि वो है? आपको पता है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक डिपार्टमेंट है, द प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। यस। तो ये इसलिए पढ़ा कि ये जो अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं दे आर फेथ बेस्ड। हमारे क्या है? हमारे जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? ब्रीहीते इति ब्रह्म। ब्रह्म वो है जो बढ़ के फैल गया। और दूसरी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
कि जो कुछ हमारी नजर के सामने है वो सारा ब्रह्म है। तो हमारा जो प्राइम सिंबल है ब्रह्म है, वो अल्टीमेट रियलिटी का एक सिंबल है। हम अपनी बात रियलिटी से शुरू करते हैं और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन ऑफ द रियल हमारी तो बात ही और है। हम ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। गुरबाणी कहती है जो अंतर सो बाहर अनंत। जो अंदर है वो ही बाहर है। और हमारे देखिए हमारे जो शब्द है ना, वो ये तो क्रिश्चियन ने हमें, हमारा ट्रांसलेशन मैंने गुरु ग्रंथ साहब का पढ़ा, लिखे एक मकार गॉड इज वन। गॉड तो हमारा है ही नहीं। वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन ब्रह्म, जो गुरु नानक खुद कहते हैं। मतलब है कि कह नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर ना आया। मैं गुरुवाणी में तो जगह जगह हमारी जो इंडिक सिविलाइजेशन का प्राइम सिंबल है वो है रियलाइजेशन ऑफ द रियल। यस। और मतलब है सतनाम, सतनाम तो सत इज रियल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, गुरु नानक देव जी की वाणी में मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने उनकी एक वाणी पढ़ी, वो थी मारू सोहले में। मारू सोहले में वो लिखते हैं अरबद नरबद धुंधुकारा। अच्छा। कि अरबों खरबों साल पहले एक धुंध फैली हुई थी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरणी ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाएगा। मैं तो संस्कृत पढ़ी, मैंने कहा ये तो पूरी ऋग्वेद के उससे है। हाँ, वो तो ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में है। ना सदा सीनो सदासी तदानीम, न सीद रजोनो व्योमा परोयत, किम आवरीवा कूकस्य, किम आसीत गहनम गभीरम, न मृत्यु आसीत अमृतम न तारिही, न रात्र्यहन आसीत परकेता। आगे जो बात कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुरबाणी से पूरी तरह मिलती। वो कहते हैं अनीत वातम स्वध्या तद एकम, कि वो जब ये ना तो दिन था ना रात थी और ना सत था ना असत था, ये सारे पंजाबी के लफ्ज हैं, आज भी पंजाबी में समझे जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तब वो एक था जो स्वयंभू था और बिना श्वास के सांस ले रहा था। अब आप देखिए मूल मंत्र में दो शब्द हैं, एक है, दूसरा स्वयंभंग है। तो मतलब है कि हमारी जो वैदिक जो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रियलिटी है ना, मैं तो एक हैरान होता हूँ कि हमारे ऋषियों ने शुरुआत कल्पना से नहीं की, रियलिटी से की है। वो जिस दुनिया को देख रहे हैं, जिसमें जीते हैं, उसी को वो थ्योराइज करते हैं। मतलब हमारी तो रियलाइजेशन ऑफ द रियल है। इसीलिए हम बात करते हैं, हम ईश्वर कहते हैं, हम परम आत्मा कहते हैं। और गुरु नानक देव जी की सुनिए कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, कि आत्म में राम बसता है। ये निर्गुण, ठीक है, वो निर्गुण राम की बात करते हैं, दशरथ पुत्र राम की नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन टर्मिनोलॉजी तो हमारी है ना। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा, के गुरु के विचार में ये है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब्राहमिक में बिल्कुल नहीं है। एक है हमारी सिविलाइजेशन प्लूरलिस्टिक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। गुरु नानक क्या कहते हैं? एका सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई ना की, जे ही सुरत तेहा तिन रा। कि सारी हर जीव की एक सुरति है, कॉन्शियसनेस है, वो उसको दी गई है, और जैसी वो उसकी सुरति है उसी के उसके मुताबिक रहा है। और फिर गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो ही देती। ये जो प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है, ये डायलॉग की बुनियाद बनता है।